Bismillahirrahmanirrahim. This is your next topic. Actually, due to internet issues, I couldn't upload this relative atomic mass. Neither I record it nor I upload it. So that's why then I didn't give this numerical related to relative atomic mass in the mid paper. So it will be in the final paper. Now, the first thing we need to understand is that what is actually relative atomic mass. So before I start this topic, uh, I'll give you some information regarding the basics of relative atomic mass. अच्छा, calculating relative atomic mass किसी भी element of an element from its isotopic abundances. Now you need to understand the word what is meant by isotopic. ठीक है, सो आइसोटोप्स को हमें पहले अंडरस्टैंड करना है. सो लेट्स डू दिस थिंग. आइसोटोप्स one of two or more species of atoms of a chemical element, okay, with the same atomic number and position in the periodic table and nearly identical chemical behavior, but only different atomic masses and physical properties. So this line is the difference, okay? This is the only difference, right? So every chemical element has one or more isotopes. इन्हें isotopes कहते हैं. अच्छा, definition से you won't be able to understand clearly. So let me give you one example. So what is an isotope of an element? Isotopes are atoms of the same element that have different numbers of neutrons. This is the point over here to remember. Okay, but the same number of protons and electrons. Now here is the example of isotopes of hydrogen. It has three, okay, protium, deuterium and tritium. Let me get it bigger so that you can understand it clearly. I can have large impact. Okay, I think now it's clear. So this is protium, okay, and protium, 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 right? It has one proton and one electron. There is no neutron, so that's why it is known as protium. Next we come to deuterium. Deuterium, one proton, one neutron and one electron. So this is the addition in this case. Then we come to tritium. Tritium, two इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, two neutrons, right? One proton and one electron. Who is the variable? Variable is the neutron, because in protium there is no neutron, in deuterium there is one neutron, and in tritium there are two neutrons. So isotopes होते हैं different numbers of neutrons, but the same number of protons and electrons. अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन है तो फिर हमारे लिए जो बड़ा इमीडिएट क्वेश्चन होता है दैट इज दैट व्हाट वुड बी द एटॉमिक मास ऑफ दिस हाइड्रोजन. अब जबकि इट एग्जिस्ट इन थ्री आइसोटोपिक फॉर्म्स, तो किस आइसोटोप का हम लेंगे एटॉमिक मास? दिस इज द क्वेश्चन. सो फॉर दिस रीजन वी गो टू द रिलेटिव एटॉमिक मास and calculating relative atomic mass of an element from its isotopic abundances. अच्छा, अब जिस आइसोटोप की abundance होगी ज़्यादा, और abundance में हम परसेंटेज ले लेते हैं 100, so 100 में जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसकी बेस पे हम we can calculate the rest of the consider the rest of the other isotopes, and then we will calculate the total relative atomic mass. अच्छा, अब इसके हम एग्जाम्पल ये देते हैं कि सबसे पहले वी गो टू द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन. ठीक है, लेट्स गो टू द कार्बन. एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन की. ना कार्बन जो है वो हमारे कार्बन नहीं, यस, कार्बन जो है वो हमारे पास आती है टू फॉर्म्स में. ठीक है,
तो this is because of nature 99 atoms out of 100 atoms of a carbon sample are carbon 12, कार्बन 13 ये कार्बन 12 है. सो हर 100 में से 99 जो है वो कार्बन 12 है. तो abundance, whose abundance is maximum? Yes, carbon 12 abundance is maximum. So if I again go to this slide, so हम कहते हैं कि 99 atoms, 99 out of 100 किसके हैं? कार्बन, which is 12 एटॉमिक मास. और अगर हम इस 12 एटॉमिक मास को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन्स हैं. अच्छा, कैसे हमें पता चलेगा एटॉमिक मास? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको हम प्लस कर देते हैं, राइट. ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, they are negligible. We never consider the mass, calculating the total mass of any element by considering the electrons. We just consider protons and neutrons, right? So हम कहते हैं कि इसी से हम इनकी abundance जो है वो, या relative atomic mass जो है वो कवर कर सकते हैं. However, not all relative atomic masses of elements are weighted in this way. Carbon 12 का तो चूंकि एक exceptional case है, because 99% abundance is of carbon 12. But what about the others? Because we cannot calculate in the same manner, we need to have a very well-defined procedure to calculate the relative atomic mass. Then we go to the example, which is the chlorine. Okay, this word is actually chlorine. Okay, this word is actually the chlorine. This word is actually the chlorine, and chlorine is one isotope is with atomic mass. This is 35, and the other is with 37. So chlorine, for instance, exists as two isotopes. Number one is chlorine 35, and number two is the chlorine 37. So the question is, how many protons and neutrons do you think each chlorine isotope has? Remember, the mass number for an isotope is equal to the number of protons it has positive plus the number of electrons. यही मैंने अभी आपको explain किया, right? So अगर हम इनको consider करते हैं, इन दोनों को, now consider chlorine 35 and chlorine 37 to calculate the relative atomic mass. फिर हम आ जाते हैं इनकी परसेंटेज अबंडेंस के ऊपर. सो परसेंटेज अबंडेंस जो है इनकी, इन द नेचर 37, क्लोरीन 37 is only 25% and chlorine 35 is 75%. ठीक है. So 25 atoms are chlorine 37 out of 100 and 75 are chlorine 35. Now what you to be able to calculate the relative atomic mass for chlorine? Yes, we can now calculate the relative atomic mass for chlorine. Now we need some formula, okay, by which we can use and then calculate. For formula आप क्या करते हैं? आप लेते हैं उस specific, जैसे chlorine 37 का if I am going to calculate, okay, mass number of the isotope, ठीक है, multiply by isotope abundance, multiply by isotope abundance. ये दो दफा आइसोटोप लिखा हुआ है, इसको मैं एक दफा जो है वो रब कर देती हूँ. मैं रब करूंगी तो ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा. सो आपने इसको लेट मी डू इट. Okay, wait a minute. So I'll go for the, इसको मैं वापस कैसे करूँ, ये नहीं हो रहा वापस. ओके, सो आप इस फॉर्मूले को लिख लें. लेट मी डू इट विथ Z. Z से भी नहीं हो रहा है. Number of isotope multiply by, delete करना,
just hold on, you need a very clear formula right over here. ये आ जाता है, ठीक है. Mass number of isotope multiplied by the abundance percentage. Again over here mass number of isotope, ठीक है, multiply by that's great, multiply by abundance. ठीक है, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करके आगे लेके जाऊंगी बिकॉज आई हैव टू डू लाइक दिस. और ये सारी इसकी जो है ना चेंज हो गई है. लेट्स नाउ दिस इज गुड. लेट मी मूव दिस फॉरवर्ड. नाउ दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ योर फॉर्मूला. ये आपका प्लस. So mass number of isotope multiplied by abundance percentage. Again chlorine 35 को आप ले लें. So this is the chlorine 35 mass number of isotope multiplied by abundance. आपने इनको multiply किया 75 multiply by 20, 75 multiply by 25 plus 25 multiply by 37. So ये आप इनके जब सारे नंबर्स वगैरह आ जाएंगे तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपकी अल्टीमेट जो कैलकुलेशंस होगी वो होगी 3550, राइट. सो जब आपने इसको कैलकुलेट किया 75 मल्टीप्लाई बाय 35, दिस इज द 35 क्योंकि हम 35 ले रहे हैं, राइट. हम 35 नंबर यूज कर रहे हैं तो ये यही मुझे थोड़ा सा हो रहा था जी, राइट. सो 75 मल्टीप्लाई बाय 35. 75 is the abundance and 35 is the mass. Similarly, 25 is the abundance and 37 is the mass. जब आप total करेंगे, you will get this. So हम कहते हैं कि this formula gives the total mass number of the isotopes. Now using the data, now we can calculate the total mass number of the isotopes just by using percentage, abundance and mass number. In doing so, we get the value 3550. The final step is now to calculate the relative atomic mass. So we will divide this 3550 by 100. Why 100? Because abundance is given in percentage. So that's why we are dividing by 100. So chlorine has the relative atomic mass 35.50. ठीक है. सो ये इसका आपने टोटल कैलकुलेट कर लिया रिलेटिव एटॉमिक मास. व्हाट यू डू, यू मल्टीप्लाई मास नंबर बाय द abundance and then add and then divide by 100. This is how you will get the answer. इसके अलावा ये एग्जांपल मैंने दी है, मैं एग्जांपल्स इस तरह की आपके फाइनल में होंगी कि आइसोटोप अबंडेंस यूरेनियम आपके पास 3 फॉर्म्स में है. यूरेनियम 238 and the abundance is 99.27. Uranium 235 abundance is 0.72. Uranium 234 abundance is 0.01%. So calculate the relative atomic mass of uranium. ऐसी ही examples हैं और यही मैं आपको examples upload कर रही हूँ so that you can solve them for your practice. Now, what we have concluded, relative atomic mass is the average weighted mass for the isotopes of a particular element. What we do to calculate this, you need to multiply the relative abundance by the mass number of the isotope, and these products together for each isotope, and then we divide by total by 100. That's how we can calculate the relative atomic mass of any element from its isotopes in the periodic table. I hope you understand this lecture very carefully, and thank you so much.